pressure well, wins the Pakistan-India contest. You think that Pakistan failed to handle the pressure, especially in the batting? Oh, look, I'll go back a little bit. I think with the ball, obviously the ball was spinning quite a lot initially, and I think the way Kishan played took the game away from us. And I think, to be fair to India, they probably got about 25 above par on that surface. And then from a batting point of view, we didn't really give ourselves a chance in terms of adjusting to conditions. Coach, just one question. You said it was spinning and Salman Ali Agha had a great start with the balls. So did Saimai bowled well in his first 2 overs. But what was the point of holding Usman Tariq back so long, the X factor? He could have been, but Ishan was going all guns blazing. Do you think Pakistan kind of missed the trick by keeping Usman so late? Look, Usman's a really good player when players are going after him, and he's got a pretty specific role for us. Could he have bowled after the power play? Yes, he could have. But I think, Abrar Ahmed has been doing a really good job for us, as has Shadab Khan post-power play. They both bowled an over that didn't go their way in terms of their lengths. But certainly I'd back those guys any day to do that job as they have done, the last 5 wins. So, it didn't work today. But as I said, Usman Tariq's got a very clear role, and I thought he was exceptional tonight. Coach, 4 days back, Australia did the same mistake. They asked Zimbabwe to bat first and then failed to chase down 170 runs. And here we again made the same mistake. The pitch got slower and low. I think had we batted first, things would have been different. Look, I think if you look at the game, the ball spun half as much in the second innings. The ball skid on. So there's nothing wrong with the decision to bowl first. It was the quality of the bowling in the first 6 overs, and also the way Kishan played in terms of took the game away from us. So certainly nothing to do with the pitch slowing down. It didn't slow down, and it spun less. So you've got to look at the facts rather than, the emotive accountability. The ball, they bowled nicely up front with the seam. We took some poor options, but certainly wasn't the pitch. Mike, you have obviously, seen a bit Ishan louder, please. You've obviously, seen Ishan up front in the IPL, and now he's again, come back in form in T20 cricket over the last 3-4 months. Just what makes it so challenging to bowl to a batter like Ishan? Well, he's fearless. He's able to score both sides of the ground, so he's not just committed to the leg side. We know he's incredibly strong there, but he can reverse. So if you've got spin, especially in the power play, it can be a challenge. But I think the fact that he's in a rare vein of form, applied a lot of pressure to our spinners and probably took them away from the basics, which the pitch was actually doing a lot when we bowled nice and slow and into it. But, outside of that, no one really scored better than a run of ball. Other than Dubé was slightly better, but it was tough. And that certainly was a standout amongst the whole match, really. Yes, please. Mike over here. Yeah. Just given the amount of the build-up to this game for off-field reasons, how did you, coming into this environment, how did you as coach deal with that with the squad? What was the dialogue? Oh, look, I think we know that it's a huge event, Pakistan against India, but we've played some good cricket. We've obviously won 5 games on the bounce. We're confident, and today we got outplayed. But in terms of preparation, the guys have prepared well. There's a pretty disappointed dressing room in there at the moment because they know how much it means to Pakistan. And, we're really disappointed we didn't play as well as we could, but we're also part of a tournament, and we know in tournament play that it's not always going to go your way. So, our job is to pick ourselves up and make sure that we're very good in 2 or 3 days. Yeah. Coach, whose plan was it to bat first after winning the toss? Is it that defensive approach? Defensive approach. This question. I've answered. Both sides. We're going to bowl first because the pitch was soft and the ball spun twice as much in the first innings than the second. So, there was talk before about the Australia game. That was a day game. This is a night game. So, like I said, nothing to do with the toss. It was just execution.
Hey, Mike. Hard luck. The margin of defeat is 61 runs, which is the highest. The previous highest was 12, so it's clearly demoralizing. As you said, the dressing room's hurting. You also said that the options the batters took today were not great. After all the preparation you've done as a coach, how do you it's very early for you to analyze, but can you just slightly expand on that, like what your feelings are when the batters take those options after preparing so well? Yeah, look, it is very much when a guy's putting you under pressure, it's, are you going to stick to your basics or are you going to go away from that? And I think, that's going to be a real challenge because as the tournament progresses, we'll be put under pressure again. And, it's how we respond when we're under the pump. All these guys are international players. They're all good players, but when the pressure comes on, are they going to trust those? Are they going to trust their decision making, or are they going to probably go outside that? And I think today, as I said, pressure made us go outside that, and that's something that for us to progress further in this tournament, it's something we're going to have to get better at. Sorry, I can't hear. I can't hear. Can at times like this in a high stakes, high pressure contest like this, can batters overthink also, even despite the experience? I think they can. I think when you see a score and you know that it's probably a little bit above par, you almost feel like you've got to play like Superman and take the game on earlier than the conditions allow you to. And I think we lost wickets early on to shots that I'm sure on that surface they were pretty tough. They were tough options on a quicker surface. At SSC, it might be a little bit different. So it is about adapting, and we've been really good the last few months about adapting to different conditions. Today, we probably took a little step back. Coach, two quick ones. One, the decision to bowl Salman Agha in the first over, that paved out really well. And the second one, whose decision was it? Whose call was it, firstly? And the second one, we saw that in the Asia Cup as well. If the board president is coming to meet the players one day before the match, does it add a bit of extra pressure on the players to, go out and deliver? It is already a very high-pressured match. Does it add extra pressure on the players? Well, look, I'll talk about Salman Ali Agha first. I mean, we'd planned that for probably 3 days in terms of we knew that Siam was probably a matchup they were going to expect with their left-handers. We felt that the way Agha bowls into the wicket, if the wicket was a little bit tacky, which it was, that he might get some advantage out of that. And he's been subtly practicing with a brand new ball the last couple of trainings. So it's something that we've both discussed. Certainly he was keen to do it and had prepared accordingly. As for the chairman, chairman's a big supporter of ours, and he comes along all the time, and before games. So I don't think it certainly doesn't add extra pressure. It's that's part of his role, and that's part of our guys know that we're representing Pakistan. So yeah. Last question. Yeah. Mike, you've been around for a long time. You've coached a lot of teams. You were in the Asia Cup as well, but. This emotion of an India-Pakistan contest is probably something that's still reasonably new to you as a coach. Is there something that a coach can do to try and keep the players stable emotionally and not get carried away by the occasion? Is there something that can be done tangibly? Yeah, look, we're trying a few different things. I think the main thing is just focusing on our job, and if we can limit the distractions as much as possible. I mean, the reality is it's going to be impossible to limit them completely, and just focus on the job. And to be fair, when we go back in the dressing room, it wasn't necessarily the occasion. It was actually our cricketing skill that let us down today, and that's something that we can definitely work on.
Not understating the importance of the game, it's just the only thing the players can do is perform and do what they do best. And tonight, as I said, it was a bit of a step back from our performance that we would expect. Thank you so much. Thank you, Coach. Thank you. Hello. Yeah. Hello. Axar, hello. Yeah. Hello. Axar, yesterday Surya was telling about, focusing on your own strengths and not worrying about what the opposition is, because all the talk about their spin versus our batting. Now, that message to the team, is that what really helped in such a dominant win, that India focusing solely on their strengths and, unleashing their strengths? Yeah, obviously we are, whatever captain says, we are focusing on our strength, and it's outside talk. There's India's batting versus Pakistan bowling or whatever. We are not thinking about that. We are just thinking about our plan and our execution. When we are batting or bowling, we are just thinking about if we are bowling first or we are bowling second, what we have to do, how wicket was. So we are thinking about our game. We are not thinking about our batting and their bowling and all. So it's usually we are taking one match at a time. So today was Pakistan team, so we are focusing on them, and that's just made our plan, and just we discussed that only. Do you still think that Pakistan should be considered as an arch rival or a great rival, because repeatedly you have been beating them, and 8 times, and is it removing the pressure out of an India-Pakistan match? See, we are seeing them as a team, so we are not thinking about this rivalry or whatever. So we are playing against one team, and we are just focusing on cricket. So we are, whenever I am playing, I am not thinking about what about others, I don't know, but I am treat as a one match and opponent. So I am not thinking about any rivalry or whatever. So we are, opposition came to play, and we are play good cricket. That's it. Akshay, पिछले team management में आप as a floater they used you in the batting lineup. We know you're an all-rounder. This team management में there's a different role at number 8, number 7 to be attack करने का, नीचे finish करने का. So I mean, you have always been considered as a team man, but क्या team man के साथ ये क्या आता है कि कहीं भी उसको adjust कर दो? And how do you कैसे manage करते हो? नहीं, so वही है ना कि आप एज ए ऑलराउंडर का काम ही यही होता है कि कि आप कभी भी बॉलिंग डाल सकते हो, कभी भी बैटिंग कर सकते हो, फील्डिंग में भी कुछ कर सकते हो. सो या एज ए ऑलराउंडर मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर आपके टीम को कहाँ पे ज़रूरत है, क्या नीड है, उस हिसाब से अगर मेरे को भेज रहे तो उसका मतलब ये है कि मुझे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि यस, ऐसी सिचुएशन में मैं काम करके दूंगा, या मैं काम ये सिचुएशन निकाल के दूंगा. तो एज अ प्लस पॉइंट मेरे लिए यही है कि टीम मेरे पे भरोसा दिखा रही है. एंड या मे बी आने वाले मैच में आप शायद मुझे ऊपर भी देख सकते हो. सो यू नेवर नो, क्रिकेट जिस तरह की गेम है आपको पता है, रेडी रहना चाहिए. T20 क्रिकेट अभी ऐसा ही हो गया है कि फ्लेक्सिबल रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे टूर्नामेंट में अगर जीतना हो तो. इमरान अहमद, दिल्ली सचिन फ्रॉम पाकिस्तान. आज जो स्पेक्टेटर थे तमाशाई, वो बहुत ज़्यादा इंडिया की जर्सी में मौजूद थे. तो जब आप खेल रहे थे तो आपको यही लग रहा होगा कि आप अपने देश में खेल रहे हैं, कैसे श्रीलंका में खेल रहे हैं, इसके हवाले से बताइएगा.
नहीं वो तो फिर हम श्रीलंका नहीं, वो तो ऑस्ट्रेलिया जाते या इंग्लैंड जाते या लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज़ भी खेल रहे थे तो सेम ही था कि ज़्यादा इंडियन के सपोर्टर रहते हैं, ब्लू जर्सी में सपोर्ट करने आते हैं। सो यस, ऐसा कभी नहीं सोचा है कि हम कौन सी कंट्री में खेल रहे हैं, जस्ट हम सोचते हैं कि ग्राउंड पे कैसी विकेट है, क्या है, उस हिसाब से हमें खेलना है। और यस, चाहने वाले सपोर्ट करने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड हमेशा ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रीलंका में, कहीं और भी कोई और हम जाते हैं कहीं कोई कंट्री में तो वहाँ भी ऐसा ही सेम, मतलब ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करने आते हैं, तो ये सेम ही हमारा रहता है। अक्षर, a word on Ishan's knock basically on that pitch जहाँ पर पाकिस्तान ने 18 ओवर स्पिन करवाया और फर्स्ट इनिंग्स में बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा था अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स शोन ऑन द टीवी, और वहाँ पर ईशान का 190 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना मतलब इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टास्क आई मस्ट से। या ऑब्वियसली जिस तरह से उसने बैटिंग किया है, आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट नॉक, क्योंकि इतना इजी नहीं था, बॉल स्पिन भी हो रहा था, कोई स्ट्रेट भी हो रहा था अंडर लाइट में, तो वो इजी नहीं था। लेकिन यही है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में वो फॉर्म कैरी फॉरवर्ड करके आया है, उसके बाद आते ही न्यूजीलैंड सीरीज़ में उतना अच्छा परफॉर्मेंस किया और लास्ट मैच में भी 50 किया। सो यही है कि आप जब कॉन्फिडेंस हाई होता है सो आप ज़्यादा अपने बारे में या ज़्यादा विकेट के बारे में नहीं सोचते हो। एंड यस, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस भी है एंड ऑलवेज उसके साथ साथ स्किल और वो सब भी दिखा है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही जगह पे मारा, उसने हर जगह पे शॉट खेले, ओवर द कवर या स्वीप, तो उसने फील्ड का भी बहुत ही यूज़ अच्छा किया। सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम। अक्षर भाई, दो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसमिसल्स आज आपने दिखा है। बाबर आजम को क्विकर वन बोल्ड और उस्मान खान को जो स्टंप के लिए आपने बॉल डाला, ज़बरदस्त डिलीवरी था। कैसे प्लान करते हो डिफरेंट बैटर्स के लिए इस पिच पे जहाँ पे शायद दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो, वो अगर आप थोड़ा सा समझा पाए। और दूसरा वन जो विजुअल्स आए थे कि रोहित भाई आप लोगों से मैच से पहले बात कर रहे थे, तो क्या टिप्स या क्या पेप टॉक उन्होंने दिया? सो बेसिकली मेरा यही होता है कि क्या ऑब्वियसली विकेट पे जो हो रहा था कि थोड़ा ऑल बॉल स्किड कर रहा था, तो कोई ऑड बॉल स्पिन हो रहा था। तो जब हम सेकंड इनिंग में आए तो मैं जब नए बॉल से डाल रहा था तो पता चल गया कि नया बॉल थोड़ा था तो वो ज़्यादा और स्किड कर रहा था। तो वो प्लान यही होता है कि बैट्समैन क्या करना चाह रहा है, वो कौन से एरिया में टारगेट करना चाहता है, तो उसके बाद मैं अपनी लाइन और लेंथ चेंज करता हूँ। और जो सेकंड डिसमिसल हुआ वो यही था कि वो स्टेप आउट कर रहे थे, तो मैं फिर मेरी लेंथ मैंने पीछे की, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट इनिंग में जो स्लो डाल रहे थे वो ज़्यादा टर्न हो रहा था, बट वो फर्स्ट वही था कि तो या वैसे ही प्लान करता हूँ। एंड पेप टॉक तो यस ऑब्वियसली आप वो इनसाइडर ही रहती है, सो लगता है कि नहीं भाई, कॉन्फिडेंस और वही थी कि ऐसे मोमेंट में इमोशन को कंट्रोल करना और वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रेशर ज़्यादा नहीं लो, तो सो ये सब ही बात थी। अक्षर, आज उस्मान ने आपको दो निकल के सीधे शॉट मारे और उसके बाद क्या प्लान कर लिया था कि अब ये निकलेगा तो शायद थोड़ा दूर बॉल करेंगे, और दूसरा मिड विकेट बहुत बड़ा था, नहीं लग सकता था छक्का वहाँ पर किसी भी स्पिनर को, ताकि वो ऑफ साइड ऑफ स्टंप खींच रहे थे सारे इधर को बॉल एक्स्ट्रा कवर पे। आई थिंक वो खुद ही बता पाएंगे कि वो क्या सोच रहे थे, बट यस ग्राउंड बड़ा होता है तब एज अ बैट्समैन यही हो जाता है कि थोड़ा हम शॉर्ट बाउंड्री पे टारगेट करें, या सामने अगर अच्छा लग रहा है, बॉल घूम रहा है और कोई स्कीड कर रहा है, तो वो उसके वजह से शायद वो आड़ा नहीं मारना चाह रहे होंगे, सो इसीलिए वो टारगेट नहीं कर रहे थे। एंड सेकंड यही है कि वो जिस तरह से स्टेप आउट हो रहे थे, तो मैं यही सोच रहा था कि यस अभी वो स्टेप आउट होंगे तो मैं बाहर नहीं डालूंगा, बट स्टंप मेरी लाइन पीछे कर दूंगा, एंड अगर वो हटके मारना जाएंगे तब मैं सोच रहा था बाहर डालूंगा, तो यही प्लान होता है जनरली। अक्षर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द विन। आज दो स्पिनर आपको पकड़ के 3 आप ऑलराउंडर है, तो ये बेस्ड ऑन द विकेट कॉल था या टीम को देख के? एंड सेकंड है कि क्या इंडिया टीम पाकिस्तान को एज अ पाकिस्तान जो एक प्रेशर वाला था वैसा गेम देखते हैं, जस्ट नॉर्मल टीम अदर गेम जैसा देखते हैं? इसी सेकंड का जैसे बोल रहे हो कि यस प्रेशर तो होता ही है, नॉर्मली हम सोचते हैं, बट वो ऑब्वियसली है कि प्रेशर होता है कि आपका आसपास के लोग या कुछ भी हो, कि घर से भी या कुछ किसी से भी बात करते हो फ्रेंड्स फैमिली में, तो ये बातें आ ही जाती है कुछ भी, तो यस थोड़ा प्रेशर और रहता है नॉर्मल मैच की जगह से, बट या हम एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हम यही सोचते हैं अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, ज़्यादा उसके बारे में राइवलरी या हमें ज़्यादा प्रेशर लेना चाहिए, तो वो सब नहीं करते हैं। एंड सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ, 3 स्पिनर का सर
हमें लगता है अकॉर्डिंग टू पिच भी हमें सिलेक्शन करना चाहिए, और वो भी है कि सिर्फ पर्टिकुलर एक मैच के लिए इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी चाहिए इतनी बड़ी टूर्नामेंट में। एंड जब ऑब्वियसली आपको पिच से हेल्प मिलता है तो यस आप यही जाओगे कि आपके बॉलर आपको काम करके दे, तो वो उस टाइम पे आपको बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यही प्लानिंग थी और उसी सोच के हमने वो टीम कॉम्बिनेशन बनाया था। Akshar, congratulations. At what stage the team was confident that the match is in the bag? And secondly, आप लोग एक साइड में 70 मीटर से ज़्यादा और एक साइड में 80 मीटर से ज़्यादा, and it was very difficult to clear the fence. How difficult? And in that context, Ishan was clearing the fence. So कितना, what do you think about that? यस ऑब्वियसली बड़ा ग्राउंड है, ये सबने छक्के मारे ही है लंबे, सो उसके हिसाब से मतलब हम ऐसे नहीं सोचते कि लंबी बाउंड्री है छोटी बाउंड्री। यस एज अ बैट्समैन आपके माइंड में वो आ जाता है कि ज़्यादा लंबी बाउंड्री है तो उधर नहीं मारना है, बट लेकिन आप वही सोचो कि आप अच्छे रन बना के आ रहे हो, उसके बाद आप सेट भी हो गए उस विकेट पे, फिर आप ये नहीं सोचते कि उधर लंबी बाउंड्री है छोटी बाउंड्री है। तो हम यही करते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट बाउंड्री पे टारगेट करते। तो यस वो, और जिस तरह से वो मार रहा है आई थिंक विद द स्पिन अच्छा कनेक्ट कर रहा है, तो यस हमारे लिए और अच्छा है कि वो ऐसे ही बैटिंग करता रहे। विनिंग तो लास्ट विकेट गिरा उसके बाद ही लगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट में ऐसा नहीं, हमने ऐसा नहीं, जब भी हम बीच में भी ड्रिंक्स हो रहा था 14th ओवर भी ड्रिंक्स हो रहा था तभी बोल रहा था कि नॉर्मल हम अपना काम करेंगे, काम कंपोज रहेंगे और उसके बाद जैसे लास्ट विकेट होगा तभी हम जीतेंगे। तो वही हमने बात चल रही थी लास्ट तक भी, 14th ओवर तक भी। थैंक यू।